Hello, everyone, and welcome to another episode of What's Going On with Armala Hassan. And we are live from our official page on Sports Fever 360. और आज के हमारे मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है और जब मैं स्टार्ट प्रिपेयर करी थी चुकली तो आई वाज वंडरिंग कि आज के शो बहुत मजेदार होने वाला है बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट क्रिकेट के हवाले से डिजिटल के हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना वी आर लाइव फ्रॉम आवर ऑफिशियल पेज तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे गेस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं कुछ बात करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम विदाउट एनी डिले मैं अपने मेहमानों का तारीफ करवाती चलूँ हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं इन्होंने दोनों ने बहुत कम अरसे में अपनी अपनी फील्ड में एक इतना जबरदस्त नाम बनाया है कि आज हर कोई इनको आइडलाइज भी करता है जो स्पोर्ट्स से लगाव रखता है सो वी हैव विद अस very talented and one of the leading presenter of Pakistan, Zohaib Hassan. Thank you so much, Zohaib, for joining and welcome to the show. Thank you so much. Thanks a lot, Armala. और Zohaib के साथ हमें join किया the very talented young producer of Sky Sports. He's an anchor, he's a commentator. Welcome to the show, Tanzil Khawaja. How are you? Assalamu alaikum. Thank you very much for having me. Well, thank you. Hope everyone else is well. Thank you so much for joining. Starting from you, Zohaib, we can see the change कि आपको ये quarantine life किस तरह से change लेकर आई है appearance में. But what about the constructive activities you are having these days? हाँ, सबसे पहले तो I mean that's the most apparent change. I think 40-day-old beard as वक्त इस तरह generally लोग नहीं देखते मुझे. So this is a pretty much a quarantine look at the moment, literally. इस पर मुझे ट्रोल भी करते हैं लोग काफी फॉर ऑब्वियस रीजन एंड बड़े मजेदार ट्रोल्स आए एक तो किसी ने कहा मुझे पुअर मैन कबीर सिंह भी किसी ने लिखा है सो आई जस्ट टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट सो अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच आई से क्योंकि आजकल टाइम आपके पास काफी ज्यादा है सो फैमिली के साथ टाइम तो गुजार ही रहे हैं which was not the case. I think the last 45 days or 50 days जो मैंने अपने फादर के साथ गुजारे हैं I don't think so in last 11 years इतने ज्यादा मैंने वक्त उनके साथ गुजारा होगा with heart to heart conversations गप्पें जो चलती हैं हमारे यहाँ he has got a very good sense of humor तो मजाक चलता रहता है एक दूसरे के साथ and then I've started reading too again जिसका कम टाइम मिलता था because I think reading is extremely important. अगर आप producer भी हैं या presenter हैं, even if you write things, script things, reading is essentially important. जो कि आजकल लोग कम करते हैं, and I think we should read a lot. Yeah. So वो शुरू किया है दोबारा से, and of course archive footage देख रहे हैं और hope कर रहे हैं कि एक दफा दोबारा से we can get to see all the action on ground because जितना मर्जी आप I think programming कर लें, glorify कर लें पास and उसके around चीजें package करके दिखा दें, nothing like live sports. Yeah, I agree. So you are missing your time in the field. अभी मैं वही इस बियर्ड वाली बात की मैंने कहा मैंने अभी जो गेस्ट की पिक्चर देखी थी that was a different guy और अभी हम जो देख रहे हैं that's something so Tanzeel tell us about your quarantine time how are you spending your time these days so हमारा जो था I think we started mid-March हमारा quarantine शुरू हुआ था and obviously we've been from work since then so let's say we're not off लेकिन you know it's kind of a holiday लेकिन we're still working Monday to Friday घर से हमारा काम हो जाता है which is really good it's really helpful so you know we're keeping busy initially there was loads to do बहुत काम था because we had to get content out as quick as possible and you know different content different types YouTube videos more for TV So it was very busy in the first few weeks. अब थोड़ा कम हो गया because we have loads of backlog of stuff that we've worked on. तो अब वो सारा आ रहा है slowly. So you know, it hasn't really felt different. बस ये है कि घर पे हम हैं for the last 2 months now. And वहीं से घर से काम कर रहे हैं. But you know, generally, you know, we spend a lot of time together as a family anyway. So हमारा इतना नहीं है कि we're having to spend time together. So generally, you know, we all spend time. So it's nothing different in that sense. But ये है कि बस we can't go out, we can't do anything else, and work is keeping me busy. So that's not bad.
Great, great, great. Okay, let's talk about your careers. Zohaib, starting from you. बस स्पोर्ट्स का ऑब्वियसली मुझे लगता है लड़कों को तो स्पेशली बहुत ज्यादा शौक होता है कि भाई बचपन से क्रिकेट है और भी फुटबॉल जिस तरह की गेम्स हो. आपके अंदर किस तरह से शौक डेवलप हुआ? बिकॉज आई थिंक कि आपकी फैमिली में कोई बहुत वालिद साहब हो या कोई बहन भाई हो जो बहुत ज्यादा इस चीज के शौकीन हो. सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस. आई थिंक स्पोर्ट्स का सबसे पहले तो अपने फादर से ही था, बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन फुटबॉल, इज अ फुटबॉल प्लेयर. सरगोदा डिवीजन के कैप्टन थे वो. तो वहां पर जब जीतते होते थे वो लीग तो एक लाइफ बॉय का साबुन और एक तौलिया मिलता था. तो दादा अब्बू हमेशा उनको कहते थे कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रेज अ फैमिली. सो आई डोंट थिंक सो. इट्स but just the pure passion for the game itself वो वहीं से आया. फिर I was lucky enough to be getting the opportunity at HSN College. वहाँ पर sports खेला, hockey, football, cricket. So sports itself का जो एक उर्दू में कहते हैं ना कीड़ा, वो वहाँ से आया था. And of course then you watch in 90s growing up watching Wasim Akram, Saeed Anwar. तो आप उनको इमिटेट भी करते थे, कोशिश करते थे कि उन जैसे बने. लेकिन at an early stage I understood that I won't be able to play for Pakistan. I think ये realization कई लोगों को जल्दी आ जाती है, कई लोगों को लेट आती है. But I understood कि एक आपका ये लेवल होता है कॉलेज का, और उसके बाद फिर there is a very big gulf between international players and all that. So वो जब अंडरस्टैंड किया तो देन आई जस्ट वाज, आई मीन जाहिर आप अपसेटिंग होता है एट सच अ यंग एज. एंड देन मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है व्हिच विल कीप मी कनेक्टेड टू द स्पोर्ट. आई वाज वेरी मच इनटू को-करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेटिंग करता था इन, आल्सो वाज पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी. तो वांटेड टू डू समथिंग जो टेलीविजन और स्पोर्ट का एक मिक्सचर हो जाए, so that keeps me close to the sport itself. और प्लस मेरा स्किल भी ऐसा रहे जो कि is something which I can then exercise. So thankfully I got my first break at 10 Sports as an assistant producer. वहाँ से स्टार्ट किया. पहला जो शो मेनली किया था that I remember was the 2010 FIFA World Cup. तो उसका एक वो 15 मिनट का सेगमेंट होता था. उस वक्त मुझे इतनी खुशी होती थी कि वो 15 मिनट मुझे जो मिल रहे हैं 10 स्पोर्ट्स पे, इट्स सच, आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है कि यार वो 15 मिनट मुझे सबसे अच्छा दिखना है, सबसे ज्यादा अपनी नॉलेज झाड़नी है, जो कि बाद में मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको एज अ प्रेजेंटर आपको कम बोलना चाहिए और टू द पॉइंट रहना चाहिए. तो उन 15 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी जितनी मुझे फुटबॉल आती थी या समझ आती थी, मैं रट्टे और पढ़ के आता था ना, तो वो घुसा दिया करता था. So that's where it all started. Great, great, great. Abhi, we'll talk about your experience in 10 sports, with working with the ICC and Star Sports as well. But coming towards you, Tanzeel, tell us about your start, because Zohaib ने कहा कि उनको ये inspiration अपने वालिद साहब की तरफ से मिली. Who was your inspiration जब आपने सोचा कि you have to pursue your career in sports? I think I have to say the same, actually. So I come from a unique family in Pakistan where we're quite into the arts and into media. So my dadabu, my nanabu, dono Pakistan mein, they were film producers and directors. So from a starting point, and then jab mere daddy aaye to the UK in the late 80s, he did a lot of media work as well. Those film, he used to edit and everything, and he was always recording things and he was always editing. So obviously, I grew up in that environment. And मुझे अपने GCSEs में जाके, and when I was about 15-16, वहाँ मुझे जाके लगा कि I'd really love to work in media somewhere. I think at first I wanted to be a film director just because of where that came down from, my dadabu and nanabu. So I was very interested in doing film directing, and then at the end of my A-levels, here there was an opportunity. So Sky runs a scheme हमारे local area में,
जो local schools में से बच्चे apply करते हैं for an internship. It's an 11-month internship. After you finish your A-levels, then you're supposed to go to university. So I applied for the internship, and 250 kids applied, and there was only 6 positions available. And I got one of them. Lekin my start wasn't in Sky Sports. I actually started in Sky Production, which is slightly different. So so when I got the internship, a month into it, वो हमारे unique results आ गए थे, and I got into my first place university that I wanted to go to. लेकिन जब मैंने उनको call किया, because I had the year internship to do, मैंने उनको call किया, and they said we can't defer your entry because it's a new course. So उस वक्त I had to make a massive decision, and I decided to take out my entry at university. So from this is July 2013. मैंने अपने फिर internship शुरू की, and over the course of 11 months I covered 20 different departments. जैसे behind the scenes departments होते हैं, so you've got the planning, the scheduling, and then you've got the media handling teams, and then मैंने lights, cameras, and sound engineers and सबके साथ काम किया था over 11 months, and that was it was an amazing experience. जो लोग वहाँ 10-15 साल से थे, they used to come to me and say, okay, you've seen more than we have in 10-15 years, which was amazing. And January, February time, universities got critical the application process, and that was a massive moment for me, where at that point I decided that I want to stay at Sky. उस वक्त मुझे कोई job नहीं थी, I didn't have anything to do after my internship finished, and I said I really want to stay here because जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, it was amazing, the company's fantastic. And I have to say, my parents fully believed in me, and they fully backed me. कभी नहीं कहा कि oh no, you're making the wrong decision, you have to go to university, you need to do this, you need to do that. I said I would love to stay at Sky, I'd love to make a mark, and they believed in me and they backed me. And then a few months later, I got offered a job at the end of my internship with one of the departments I was working with. So I finished my internship on the last day of June, and the first day of July I started working permanently for Sky. And then I just stayed there. I was in that department for 2 years, and then I moved on to a different department after a year and a half. And then between that second department I worked with, वहाँ मुझे cricket के साथ बहुत मौका मिला था काम करने का. And they could see I worked with a lot of the producers. मैंने बहुत काम किया था उनके साथ. I used to go on my days off. अपना lunch time use करता था. I used to go sit with them. कभी edit suite में बैठा, कभी office में बैठा उनके साथ. And they saw me, they knew me, they knew my name, they knew who I was. तो जब एक job आई 2 साल पहले cricket में, one of the producers emailed me and he said, there's a job going. If you would like to apply, I think you'd really be a good candidate. So I applied for the job. It was a junior assistant producer. Applied for the job, had my interview, I got the job, and then the year after, so last year, I got promoted to assistant producer, and that's been my crazy journey so far. Zabardast. That's interesting. Okay. Zohaib, अभी जैसे से तंजील बात कर रहे थे कि he started from a very grassroots level. आपने सीखा, सारी basics को जाना, उसके बाद आप फील्ड में आते हैं. डू यू रियली थिंक कि हमारे अब के जो लोग हैं, या हम जिनको न्यू कमर्स कह सकते हैं, दे आर विलिंग कि वो इन तमाम टेक्निक्स को इनिशियल या ग्रासरूट लेवल से सीखें, और उसके बाद वो एज अ प्रेजेंटर बनकर या एज अ प्रोड्यूसर या जिस तरह से भी जो भी फील्ड वो चूज करते हैं? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम रातों रात बस मशहूर हो जाए. इफ इट्स स्पोर्ट्स or if it's news, if it's programming. So I want to know कि आप इस पे क्या समझते हो? I think everybody loves the shortcut. I think that's in a way, I think human nature है almost. The very less people who would really want to go through the process. लेकिन हमारे पास opportunities भी यहाँ पर पहले बहुत कम थी to groom ourselves. Now in Pakistan, as I see, आज से 12 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था, 11 साल पहले, तब इतनी opportunities नहीं थी. अब there are a lot of opportunities.
not only to learn but also to hone your skills. तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और आई थिंक अगर आप सही तरीके से चीजें करने की कोशिश करें, वेदर इट बी प्रेजेंटिंग, अगेन जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि पढ़ना बहुत जरूरी है. सो इफ यू रीड अ लॉट, देन इफ यू आर राइटिंग, तो फिर आपका गेम बड़ा जबरदस्त हो जाएगा. एंड यू सी इट, आई मीन इवेंचुअली यही होता है कि पीपल हु गो थ्रू दैट प्रोसेस, हमेशा लॉन्जिविटी उनमें ज्यादा होती है, और दूसरे जस्ट जो ग्लोरी हंटर्स होते हैं वो ज्यादातर फेज आउट हो जाते हैं. Exactly. You're right. Okay, Zohaib, you have worked with Sky Sports, ICC, PCB, a lot of good international houses with that. और उसके साथ साथ जब हम बात करें हम PCB के साथ भी, because experiences हर जगह के different होंगे. आपने ICC के साथ एक different experience के साथ काम किया होगा, PCB के साथ different होगा. So what was the best one जो आपको लगता है कि उसने आपकी grooming में बहुत अहम किरदार अदा किया है? आई थिंक 10 स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें हर तरह की ग्रूमिंग हुई. उसमें क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था, तो स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, जो वहां पर मेरे सीनियर्स थे, आई हैव टू नेम देम, तुर्जो सेन, हेमंत बोच, चैतन्य तिवारी, आई रिमेम्बर वेरी वेल. देन जो वॉइस ओवर्स करने आते, पीटर हटन आते थे. सो आई मीन वहां पर लर्निंग बहुत ज्यादा हुई. So I was very lucky to be guided by people who themselves already were stalwarts of their industry. So उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ. और फिर I mean वहाँ ऐसे मेरे साथ वाकयात भी हुए जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे जिंदगी के बारे में लर्निंग दी. 2009 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था वो अनफॉर्चुनेट, तो वो दैट वाज माय सेकंड सीरीज जो कि मैं प्रोड्यूस कर रहा था. So we were all there in the stadium already. 8:45 का वक्त था, और जब हमें गन फायर की आवाज आई तो उस वक्त डायरेक्टर होते थे गैविन स्कोवेल, अब वो आईसीसी में भी करते हैं डायरेक्ट. तो एंड हम लोग पहले फैक्ट चेक करते हैं, और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट तंजील वुड नो. तो अभी हम उसी ड्रिल्स में थे, तो गन फायर हुआ. तो उन्होंने कहा कि he used to call me Zaid. He said Zaid, something's wrong, and I was like it's the start of जो आप कहते हैं ना बहार है, और उस वक्त इतनी पाबंदी भी नहीं थी पतंगे उड़ाने पे. और पाकिस्तान में और लाहौर में अगर कोई बंदा पला बड़ा है, बिकॉज वेरी मच फ्रॉम लाहौर, तो उसे ये अंदाजा है कि कई दफा पतंग जब आप किसी की काट देते हैं तो फायर कर ही देते हैं हवा में. exactly. तो मुझे लगा पहले कि शायद वो हुआ है, तो मैंने कहा कि शायद वो हुआ है. फिर फायर थोड़ा इंटेंस हो गया, तो फिर मैंने कहा ये यहाँ तो कोई ज्यादा बंदा गुस्सा कर गया है या फिर इट डजंट साउंड राइट व्हाट इज हैपनिंग. और उसके बाद फिर एक बिल्कुल ट्रेजेडी हमारे सामने आई. मेरे अभी तक आई विविडली रिमेम्बर जिस तरह वो बस अंदर आई थी, और उनके ओपर होते थे परना विताना, and blood was all splattered on his shirt, and then we were shocked. और मुझे याद है मेरे साथ एक कैमरामैन खड़े थे साथ, ब्रैडली मरे, and he asked me that Zaid, are we safe? And I just said to him, though I was standing right at the heart of my own city, I couldn't guarantee. I just said to him that I can't even guarantee my life at the moment, so we just have to run for cover. And that is exactly what we did. और बस उसके बाद फिर क्रिकेट में तो बिल्कुल ही बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुई. So that's why when it came back slowly and gradually, and we saw the PSL final, and I was lucky enough to be involved in that too. वो भी प्रोड्यूस कर रहा था जब फर्स्ट फाइनल हुआ यहाँ पर. So was quite an experience. I mean बहुत इमोशनल वक्त था. So जहाँ पर स्किल लेवल पर मेरे 10 स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस ने मुझे काफी चीजें सिखाई हैं, वहाँ पर जिंदगी के बारे में बहुत सिखाई है. मुझे याद है एक दफा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था अरमला लियारी में, जो कि मैं प्रोड्यूस कर रहा था, एंड लड़ाई हो गई दो टीम्स के बीच में, बिकॉज देयर वाज अ रेड कार्ड दैट वाज शोन, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम. मतलब हमने देखा हुआ है कि लोग राउडी हो जाते हैं, लेकिन वहां पर
पहले तो प्लेयर ने रेफरी को थप्पड़ मार दिया, उस थप्पड़ मारने के बाद क्राउड में से किसी ने गोली चला दी। So, I mean, this was something जो कि मेरे लिए unprecedented थी चीजें। मैंने कहा यार ये तो मतलब this is not what I thought that I will be getting into when I thought that I was going to get into sports production and presenting. तो ये कुछ ऐसे experiences थे कि उसके बाद and फिर उसके बाद इतना unfortunate हुआ वहीं उसी ground में I remember कि कुछ अरसे बाद once the tournament was over and all that, उसके बाद तो हमेशा पुलिस प्रोटेक्शन में जाते थे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया एंड देयर वाज सो मेनी किड्स दैट लॉस्ट देयर लाइव्स, वो वहां पर शहीद हुए, जान भाग हुए। तो आई मीन स्पोर्ट्स क्योंकि इतना अनफॉर्चुनेट टाइम्स रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी नाउ कि पाकिस्तान अब वे बेटर है। अब मुझसे लोग पूछते हैं, जब बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसा है, इस दफा भी जब पीएसएल, अब तो इस दफा तो कोविड-19 की वजह से सस्पेंड हो गया, लेकिन जस्ट टू सी कि 4 वेन्यूज के ऊपर with so many international players, the matches itself are happening and Pakistani public is turning up, especially in Multan and in Rawalpindi. Heartening experience था। I mean, वर्ड में बयान नहीं किया जा सकता कि कितनी खुशी थी मुझे पर्सनली भी, क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है जब पाकिस्तान कोई आने नहीं चाहता था और जिन वजूहात से आना चाहता था वो अपनी आंखों के सामने देखी थी। तो उसके बाद ये सब कुछ देखना वो सो हार्टनिंग और बहुत ही शुक्र करता था मैं। Actually, we all cherish those moments because हमने इतना एक लंबा गैप देखा है sports, especially when it comes to cricket, और उसके बाद इस तरह की activities obviously हर एक को बहुत खुशी होती है। अभी मजीद हम इस पे बात करेंगे, लेकिन तंजील आपसे भी जानेंगे बिकॉज अभी जैसा जोहेब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सीखने को मिलता है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। While working in Sky Sports, आपको क्या लगा कि आपकी पर्सनल या पर्सनालिटी के अंदर जो ग्रूमिंग हुई वो किस हद तक आपके लिए फायदेमंद हुई उन तमाम चीज़ों को लेके जो आप काम कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में? I think I've always been confident. I've always been a confident individual. Lekin when I started working at Sky as an intern, just I was very young, straight out of A levels. So like an 18, 19-year-old. So for me, मैंने ये सोचा था कि मैं जा रहा हूँ Sky. I'm a kid. I'm going to be working with people who have been there for 10, 15 years, the senior people and everything. And Sky is a huge company and it's going to be so overwhelming. Lekin as I got through the year and I started working there and everything, मुझे पता लगा, I kind of learned how to be confident and how to be a more approachable person as well. So taking that over the last few years when I started working at Sky, now especially in my job now, because I work for cricket, being confident is so important. You have to work with some of the best players in the world, some ex-cricketers, commentators. So you have to show a bit of confidence. And I think when I internship and I started working at a certain level, that's really helped me to become more confident. So, I feel like that's been really helpful. And also, I've been really lucky. The managers I've had over the last 6 years working at Sky have been incredible. Our department manager, my managers have been amazing. All the way from the start of my internship, all the way to now. Skype, everyone's been so good to me, and everyone's helped to make me a better worker as well. They've always seen my thirst for wanting to move on and thirst for going on, and they've always helped me do that. So I think I've had a really good environment as well at working at Sky, which has helped me, to get to where I am now. Okay, great. Okay, Zohaib, tell us about your experience with IPL. If I'm not wrong, you covered it in 2014, right? So how was that? I was actually IPL ऐसे मैंने कोई प्रोड्यूस नहीं किया था. मैंने ITV के लिए काम किया था. Actually ITV, Tanzil would know ITV in UK. So for them I was working and क्योंकि वो UAE में हुआ था, that was the reason I did that. मतलब it was a good experience because basically what I was doing was interviewing players and interacting with them, making features. So got to know a lot of Indian players well.
so got along well with मतलब विराट कोहली से पहली दफा ठीक तरह से मुलाकात हुई थी. उससे पहले हालांकि 2010-11 सीरीज मैंने की थी साउथ अफ्रीका इंडिया की, तब वो इतनी लिफ्ट नहीं कराते थे. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक वक्त के साथ साथ जनरली लोगों में आकड़ आ जाती है. ही इज गॉन द अदर वे, ही इज बिकम मे बी हम्बल एंड मोर फ्रेंडली. So then 2019 वर्ल्ड कप में भी काफी ठीक चिलिंग रही उनके साथ. So got to know him well. महेंद्र सिंह धोनी very well. I always give an example of him because बहुत ही जेंटलमैन आदमी है. मुझे याद है जोहानिसबर्ग में एक दफा नेट्स हो रहे थे. So the Indian team after practice they went out and there were a lot of people outside जो कि ऑटोग्राफ के लिए खड़े थे. तब सेल्फीज कम होती थी, शायद सेल्फी वर्ड भी नहीं आया था, 2010 की बात है. तो बाकी सारी टीम चली गई एंड बाकी जो मैनेजर थे टीम के वो कह रहे थे कि चलो हमें लेट हो रहे हैं. सो महेंद्र सिंह धोनी ही सेड नो, आई विल साइन ईच एंड एवरी ऑटोग्राफ क्योंकि ये सारे लोग खड़े रहे हैं, मैं बाद में टैक्सी से आ जाऊंगा. सो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हिम. सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और फिर और कौन है, सुरेश रैना से भी अच्छी दोस्ती है. तो वो अब मतलब अब तो काफी देर से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फेसबुक पे हम इन टच रहते हैं. तो 2014 क्या एक्सपीरियंस से जो इंडियन प्लेयर्स से जानना हुआ था वो वहीं पर हुआ. Okay guys, Ali Khan Tareen is in the house and Ali Khan Tareen is saying cool stories guys, great to see you young self-made people doing well. Also you both need haircuts. अली को ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई पीपी समेत किसी बाबर को भेज दें जो कि बहुत ही सेफ तरीके से हमारे बाल काट दे, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम जस्ट सो पेट्रिफाइड टू गो आउट टू अ सैलून. मुझे वी गेट द मैसेज, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर गेटिंग दैट और नॉट. वी गेटिंग मैसेजेस कि आपको होम सर्विस दे देंगे हम. So yes, everyone is getting are you getting it? Yes. Yes. So मैंने कहा यार मतलब how is it different from going to a salon? मतलब तकरीबन उतना ही ज्यादा रिस्क लग रहा है मुझे. हाँ, तो इसका डर लग रहा है. We always expect some fun comments from Ali Khan Tareen because whenever he comments, वो हर एक को हंसा देते हैं. So thank you so much for being a part of our show. So Tanzeel, अभी ज़ोहैब ने जिस तरह से बताया कि उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन या एक बहुत अच्छा जो कह ली ताल्लुक बना बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ. वो आप अपने हवाले से भी बताएं कि किस तरह से जब आप प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं या आप फील्ड में ग्राउंड में होते हैं तो किस तरह से लोगों से इंटरेक्शन आपको कुछ अच्छी बातें भी सिखाता है, कुछ आपको ओवरऑल फील्ड के हवाले से भी गाइड करता है. Yeah, I think obviously हमारे team के साथ we've got Nasser Hussain, Michael Atherton, and all these players as well. So they're always very accommodating. So obviously I grew up watching these people, and it's a very surreal experience. Kabhi, I still have to think that that I'm working with these people now that I watched. And it's, I think, David Gower, this was his last test match that he did for us. I was there. That was my first time I was shadowing in a ground, in an OB. And luckily, I got to see him there. I think what we don't realize is how professional these people are. And it's that professionalism which when we work with them, we trying to kind of rubs off on us, and I think that's really good for someone like me. I'm still relatively new to the department. I've only been there 2 years. I've been bought come time with Sky Sports me, and I'm learning every single day. There's so much I still need to learn, and there's so much I need to do still, which is what I'm really looking forward to. And I have really good people above me that have been in the job for 4, 5, 6, 10, 15 years, and it gives me an opportunity to learn everything that I need to learn from the top down. And also, when we're working on OBs and we're going out on the ground and everything, there's always a sense of fun. It's never, it's work, but it's never like, oh God, I have to go and work now. It's a lot of fun because of who we work with and what we do. Exactly. ये वाला ज़ोहैब सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको मजा आ रहा है काम में, तो आप you never get tired of it.
So, अभी एक मैं कुछ आपसे कुछ आपकी फनी मोमेंट्स या कुछ ऐसी मेमोरीज जानना चाहूंगी बिकॉज जी जी आपने लाइव भी किया है, प्रोग्रामिंग भी किया है लाइव हाँ, में। देयर इज अनदर चार्म जो आपको लगता है कि लाइफ की एक ब्यूटी होती है, फंबल्स, उसमें कुछ oh yes. मिसहैप होना या कुछ भी करना, ये एक खूबसूरती है। सो टेल अस अबाउट एनी ऊप्स काइंड ऑफ मोमेंट इन योर करियर, क्या आपने बहुत एक कभी आप एम्बैरेस हो या बहुत आपने फनी बात कर दी हो? um, अच्छा सवाल किया आपने। इस वक्त मुझे फनी नहीं याद आ रहा, ऑन एयर याद नहीं आ रहा, ऑफ एयर जरूर याद आ रहा है मुझे। Okay, tell us about that. हम लोग शो कर रहे थे इकट्ठे दिल्ली में, मैं बाजिद खान और मिसबाउल हक। आई थिंक इट वाज द 2014 वर्ल्ड T20। सो वो दोनों भी काफी ज्यादा खाना माशाल्लाह बहुत ज्यादा खाते हैं। सो and I used to eat a lot too। अब मैंने थोड़ा कम कर लिया है, but I used to eat a lot। I mean मैं किस तरह आपको बताऊं, मतलब 1.5 किलो कढ़ाई खा जानी, मतलब बिल्कुल इस तरीके के बातें। और so what happened was कि हम लोग ऑर्डर करते थे खाना वहां पर स्टूडियो में। सो वहां पर एक रेस्टोरेंट है पंजाबी बाय नेचर। तो उधर से हमने ऑर्डर किया। तो बाजिद खान ने अपने जैसे अपने रिवायती अंदाज में क्या क्या अच्छा है उसका बताओ जरा। तो आई सेड कि उसकी सुना है रान बहुत अच्छी है। तो उसने कहा अच्छा चलो कर दो मेरे लिए ऑर्डर। तो एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हम लोग 3 लोगों के लिए 3 रानें मंगवाते थे बकरे की। 3 हाँ। तो जब ऑर्डर करते तो पूछते थे हाँ हेलो ये बताओ कि 3 लोगों के लिए 3 राने बहुत हैं। एंड लिटरली उसने पूछा कि 3 फैमिलीज के लिए सर। हमने कहा नहीं 3 बंदों के लिए। तो 3 राने खानी। फिर आगे से बाजिद खान साहब ने जो है ये कहना मुझे कि नान नान एक ही ऑर्डर करना। मैंने कहा क्यों, मैं डाइट पे हूँ। तो पूरी रान खा के तो एंड उसी से मुझे याद एक वो गोलगप्पों वाला था, हमें बड़ा यहाँ पे तो हमें मिलते हैं ना ये जो मैदे के गोलगप्पे मिलते हैं। तो वहां पर एक गोलगप्पे होते हैं सूजी के। सूजी के गोलगप्पे मिलते हैं। तो हम दोनों गए, हमें इतने पसंद आए वो। सो हमने 1 प्लेट खाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो अब अगेन मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हम 2 लोग थे और हमने 12 प्लेट खाई। 1 प्लेट में 6 गोलगप्पे होते हैं। सो 72 गोलगप्पे हमने खाए। और उसके बाद जब हम वापस जा रहे हैं तो अगेन बाजिद सच अ स्वीट गाय, ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी कि अच्छा ज़ोहैब अब बता यार कि लंच के लिए क्या करेंगे। हाँ लंच के लिए क्या। तो सेड यार मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि अब हम लंच कर सकेंगे। तो इस तरह की मुझे 2 बातें तो टॉप ऑफ माय हेड याद है। That's funny actually. Okay, अभी हम आप लोगों से कन्वर्सेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ कमेंट्स और साथ में आप लोगों के आपके फैंस, हम धोनी की तरह इनको बिल्कुल इंतजार नहीं करवाएंगे और हम अपने फैन के लोगों के कमेंट्स लेना शुरू करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या क्या सवाल आ रहे हैं। सो साथ में मैं अपने भी सवाल कुछ। अच्छा जी, Akbar Ali, what's your advice regarding digital media to the youngster who wants to flourish? Zohaib. हाँ मेरे ख्याल से अगेन whatever you want to do, firstly अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एज अ प्रेजेंटर एंड प्रोड्यूसर तो सबसे पहले होमवर्क जरूर करें। वेरी इंपॉर्टेंट टू जो जिस टॉपिक के बारे में भी आपने कोई फीचर बनाना है और यू गोइंग टू गिव पीस टू कैमरा, फर्स्टली रीड अबाउट इट and also read if it's a controversial issue, read all aspects of it and all voices and evidences jitne bhi aaye hain, so that you are going to give a clear you will give all the aspects aur uske baad never be judgmental। ye main sorry judgmental, never be a judge of things, क्योंकि आप मैंने जो देखा है जो मेन मसला मुझे लग रहा है आजकल वो ये है कि जो प्रेजेंटर्स हैं दे से सेल्फ बिकम एक्सपर्ट और वहां पर मुझे थोड़ा सा
issue ये हो जाता है कि you are making a fool of yourself. Because as a presenter, as an anchor, you need to ask a question. Rather कि आप अपने expert, for that you have the experts जो कि cricketers हैं who've played the game. मतलब मैंने इतना भी देखा हुआ है कि एक presenter एक show में सईद अजमल को कह रही थी कि इस pitch में spin नहीं है. तो सईद अजमल ने कहा इसमें spin है. तो उन्होंने कहा नहीं उतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं. तो सईद अजमल हैड टू से कि भाईजान मैं अकेला हुआ हूँ इस विकेट के ऊपर. So I mean he just embarrassed himself or herself. So वो बहुत ज़्यादा so वो बड़ा important है. Then reading again, I can't stress any more कि reading is extremely important. अब तो बहुत आसान है. I think the amount of information out there that you can get in a week's time लोगों को पूरी जिंदगी नहीं मिलती थी यार. नहीं मिलती है. Exactly. It's just a click away. Just have to. So आपको fame, मुझे पता है people love to get the fame, love to get the attention, क्योंकि era ही इस वक्त ऐसा है. I think the Instagrams and the Twitters and Facebook have all ऐसा बना दिया है कि everything is about me, but that's not how it is. Exactly. And people also don't really want to see you all the time, and it's not about you. It's about a topic which they are interested in. So you have to convey that. आप वो अच्छे से करेंगे. So उसके बाद people will आप fame और ये बाकी चीजें आ ही जाएंगी. If you're doing things the right way, these things will fall into place. ये बाद की चीजें हैं जो इसको लोग पहले पकड़ लेने की कोशिश करते. आप अभी फेम और इसकी बात कर रहे थे तंजील, यही बात मैं आप पे भी थ्रो करूंगी. आई कम बैक टू ज़ुहैब. मैं इसको आगे इस तरह से लूंगी कि अभी हम डिजिटल और जब हम टीवी की बात करते हैं, बिकॉज डिजिटल ने हमारी जिंदगियां बहुत कन्वीनियंट इस तरह से कर दी हैं कि पहले अब हमें किसी की वो के लिए मोहताजी नहीं है कि हमें अपना कोई कंटेंट अगर इंटरनेट पे या लोगों तक पहुंचाना है तो वी नीड अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट. अब हम शायद खुद से वो प्रोड्यूसर या वो चीज कर सकते हैं कि हम अपना कंटेंट बनाएं और डिजिटल पे डाल दें. So, किस तरह से ये जो डिजिटल का इस्तेमाल है, is it good, is it bad, or it should be monetized or something like that? What do you think? I think it's fantastic if it's used correctly. मुझे लगता है कि जैसे ज़ोहैब भाई कह रहे थे कि when you produce something and if you are the anchor and the producer, do your homework but don't be the judge. मुझे लगता है कि just as ज़ोहैब भाई जैसे कह रहे थे कि if you become the judge of your own show or if you are producing something and you are giving your remarks and your opinions, फिर वो सही यूज नहीं हो रहा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म. आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, it should be used to show both sides of an argument, both sides of a story that you have researched or that you are doing. And I think for people who do that, जैसे हम, you're doing, you've called on two people, you've been calling on others, you always get people's viewpoints and everything, you move on the show, obviously आप अपनी opinion दे सकती है, लेकिन you are really good at just keeping the conversation going and letting the guests talk about what they need. And I think just like that, just as Zohaib भी कह रहे थे, if you are making a feature, if you are writing a piece, always do your homework. मुझे याद है जब मैंने Sky पे शुरू किया था, when I started in the cricket department, पहला week, they made me sit down and they made me watch every documentary that they've done. मुझे कहा गया था कि देखो जैसे हम काम करते हैं, make points, understand how we do things, understand the flow and process of doing what we do, because I'm sure, I know I work for Sky and I say this, like, I'm sure others will agree that, the work that we do, the documentaries that we make are fantastic. And the reason they're so good is because the research that goes into them. I guess a lot of people लोग सोचते होंगे कि आइडिया सोच ली, थोड़ा देख लिया उधर तो get a camera and start filming. No, when we do documentaries, it's months and months of planning, months and months, and then फिर आपने filming भी करनी होती है. You need to get a balanced view. जैसे for example, last summer there was the Kevin Peterson documentary. One of my colleagues did. Now, obviously, KP being such a controversial figure, there's very strong sides for and against. So obviously, during the documentary, there were people who were very much in favor of KP and they were very much against KP. So always giving that balanced argument. Up dekhenge, and shameless plug here, but tomorrow on Sky Sports, my colleague's MCC in Lahore feature is going out.
And again, what we tried to do is try to create a balanced viewpoint of the incident that happened 10 years ago and what's happened since then, and how it can improve and we can move on 10 years later and in the future. So just as Zohaib was saying, do your research, do your homework, watch as much as you can, and read as much as you can. Mujhe yaad hai, one of my dad's friends, who's the producer in America, I ended up meeting with them way before I applied for my internship, and they gave me one piece of advice, and this is one which has stuck with me for a long time. 3 words: be a sponge. They said that to me. Absorb every bit of information you come across. Take in everything that you can, because kahin na kahin is going to come. It's going to help you at some point. I remember my first week of internship. I remember I had a notebook, I had a little diary, and everyone I met for that first week, maine sabke naam likhe the, what they look like, what they did. So then obviously when I start talking to them and knowing them more, it was more of a natural conversation. So just I think going back to an earlier point, when you asked, will people do this now? I think you have to have that drive. I think you have to have this passion to move on, and you have to have drive to keep going and improving yourself. TK, you get to a point and you say, oh yeah, I'm quite comfortable here, I like it here. But then if you really want to move on and you really want to go the next step further, you have to have a drive and passion for it. And I think that's a really important piece to have. Okay. Zohaib, अभी तंजील ने बात की कि हम उसको कुछ कंट्रोवर्शियल भी कर सकते हैं. एक पर्सनालिटी है, अगर हम उसको एक बैलेंस के उसके बारे में कुछ बता रहे हैं तो देयर शुड बी सम बैलेंस. बट हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन देखी जाती है कि we seek for controversial stuff so that we can get famous. या हम उसको कैश कराएं या हम उसको इंटरनेट पे थ्रो करें, we'll get views and all that. So ये डिजिटल का एक नेगेटिव पॉइंट तो है, because whenever we talk about something तो हम उसमें ज्यादातर कंट्रोवर्सी का फैक्टर ढूंढते हैं. If it's media, if it's digital, everything. So what's your take on that? Zohaib, can you hear me? So sorry, can you ask the question again? Okay. I lost you, maybe because of the internet. Okay. Now go on. शुरू में मुझे समझ आया कंट्रोवर्सी की जो बात कर रही थी, उसके बाद क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूँ कि कंट्रोवर्सी हम ढूंढते हैं कि हम उस कंटेंट को डिजिटल पे या सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको करके we can get the attention, और उस कंट्रोवर्सी से हम शायद मशहूर हो जाए. So that's the negative point. अच्छा. I think that stems from the culture of the news channels that has developed in Pakistan, जहाँ पर controversy and to an extent negative information about someone for whatever reason is considered that it has potential to be more popular, if I can put it this way, which I don't think so is the case in reality. लेकिन क्योंकि वो culture इतना ज़्यादा अब instill हो चुका है हमारी society के अंदर, that's why people think कि अगर हम controversy किसी की निकालेंगे ना, चाहे वो उसकी personal life से हो, चाहे उसकी कहीं cricketing life से हो, या उसकी कहीं से भी कंट्रोवर्सी अगर निकालेंगे ना, तो वो ज्यादा चलेगी, which I don't think so is the right way to go about it. अगर आप किसी भी फिगर के बारे में बात करते हैं, so again you have to put, क्योंकि हमेशा दो साइड्स होती हैं कॉइन की, ऐसा होता ही नहीं है. मतलब वो बड़ा मशहूर शेर है कि मेरा शिकस्ता घर भी देखो, शीश महल तो देख चुके, एक तस्वीर के दो रुख हैं, ये मंजर वो पस मंजर है. So I mean ऐसा हो ही नहीं सकता. There's always, the truths always lie in the gray. Black and white नहीं होती चीजें कुछ. So that is where, as a producer, as a creator, your responsibility lies to put everything through. Okay, this is his black, this is his white, these are the grays, and now it is up, the jury is out there for the people to decide. I am not the judge, and I can't be the judge because I was not present until or unless I have a court verdict. That of course
अगर वर्डिक्ट आ जाता है तो वो हम एंड में जरूर we can mention it that this guy is convicted and this guy is not convicted. So that is extremely important. वो कल्चर बड़ा अनफॉर्चुनेट है. आई थिंक अगेन जो जिन्होंने बनाया है क्रिएटर्स ने, देखिए पाकिस्तान के अंदर क्यों ये सारी चीजें थ्राइव करती हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हमारा व्यूअर है उसके पास रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है. उसने जब बेहतर चीज देखी नहीं है, उसने अगर एक अलग जाविये से चीजें देखी नहीं है, तो वो कभी कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही तरीके की चीजें देखता है तो उसको लगता है यही नॉर्मल है, ऐसा ही चलता है. और इसलिए जो अगले क्रिएटर्स भी हैं आपके, क्योंकि वो यही देखकर अपने इंस्पायर हो रहे हैं, इसलिए जो रीडिंग की और वॉचिंग की बात थी मेरी, that just to take it to the next level, it is not, should not and never be confined only to your country. आप पढ़ें, आप बाहर के ब्रॉडकास्टर्स को भी पढ़ें, उनको भी देखें, आप हर तरह के देखें, पाकिस्तानियों को भी जरूर देखें, बिकॉज उसमें भी आपको डूज एंड डोंट्स बहुत पता चलेंगे, एंड आपको अपनी कल्चर की सेंसिटिविटीज एंड लोगों की सेंसिटिविटीज भी बेहतर पता चल सकती हैं. क्योंकि अगर आप सिर्फ हाउ थिंग्स आर डन इन यूके और इन अमेरिका, वैसा भी प्रोग्रामिंग पाकिस्तान में 100% नहीं चल सकती है, बिकॉज एवरी कल्चर, एवरी प्लेस हैज देयर ओन सेंसिबिलिटीज एंड सेंसिटिविटीज. सो जितना ज्यादा आपका ब्रॉडर होराइजन होगा, उतना प्रोडक्ट आपका बेहतर निकल कर आएगा. एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इट फर्दर कि हाँ, अब आपके पास एक्सेस है टू ऑल द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. बहुत आसान है किसी के लिए भी वीडियो बना देना और वो खड़ा होके अपना वर्डिक्ट दे, सब कुछ कर दे. लेकिन जो शख्स अपना होमवर्क करके अच्छे तरीके से करेगा, his one video will definitely stand out from the 1000 videos that the other people have just made in haste or have just tried to impose themselves without much knowledge. एक बड़ा और आर्गुमेंट्स भी वहीं पर ही ज्यादा बढ़ते हैं अमला, जहां पर एक शख्स की नॉलेज कम होती है. Little knowledge is dangerous. Little knowledge is dangerous. ये वाला हिसाब रहता है. Okay. So we have few questions as well, but चलें ये कर लेते हैं. What is the future of sports production in our country? दोनों से जानते हैं. तंजील आपसे जानेंगे, फिर ज़ोहैब की तरफ आते हैं. I think do you want me to answer for Pakistan or you want me to answer for UK? Because you can answer about because अगर मैं आपको अपनी opinion देता हूँ from outside into Pakistani production. I think just as Zohaib bhai जैसे कह रहे थे, I think the culture does need to change. मुझे लगता है कि there's a lot of negativity in Pakistani media regarding, I think, sports and production and all this, and again it stems from the education of knowing what works, knowing what doesn't work. लेकिन मसला ये है कि the culture is so ingrained within the broadcast industry in Pakistan, I think, looking from outside, that it's I think it would be hard for someone to break through, which someone who can give both sides of an argument or give both sides of a viewpoint. And I think, but the good thing is, going back to digital media, and I think the more you have available now, the more you can learn. And just as you have to look at people outside of your own country as well. And I think, again, you can learn a lot from people like Sky Sports. You can learn a lot from people like Sky Sports in New Zealand. You can learn a lot from the Australian broadcasters. I think there's so much knowledge out there now because we have access to YouTube, you have Twitter, you have Instagram, you have so many different platforms. And again, advice is, I think for the future of broadcast, in order for it to improve, it has to improve. But in order for it to improve, people do need to learn more, and I think they need to expand their horizons. In terms of the UK, I think it's a very different culture. Obviously, we're very, in a sense, we're more balanced in our viewpoints and in our productions than I'd say Pakistan broadcasters. And obviously, being the top broadcaster in the UK, everyone sort of looks at us to see, how does Sky do it? How does Sky do this? How does Sky do that? And I think. Yeah, so I think in that sense, if I had to talk about Pakistan, I'd say, the culture does need to change, and that can only come through education of knowing what works outside of Pakistan. Exactly. Okay. अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, बिकॉज हम अभी देखते हैं कि हम स्पोर्ट्स के चैनल्स की बात करें.
So there are very few channels जो पाकिस्तान में sports को उस तरह से promote करते हैं, broadcast करते हैं. But when it comes to digital, there are very so many platforms जो इसको करना चाहते हैं और जो कर भी रहे हैं. So इससे हम जब पिछले कंपैरिजन करें तो शायद डिजिटल पर भी उतनी ही व्यूअरशिप होती है जितना लोग टीवी पे देखना पसंद करते हैं, बल्कि अब मुझे लगता है ज्यादा लोग, अगर हम कबड्डी की एग्जांपल लें तो देयर वर मोर पीपल जिन्होंने डिजिटल पे उसको फॉलो किया, बिकॉज बहुत कम चैनल्स थे जो उसको प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट कर रहे थे. सो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स और डिजिटल का एक जो कनेक्शन है, या इसको किस तरह से मजीद हमें इस पे वर्किंग करने की जरूरत है, बिकॉज ये एक बड़ा पॉजिटिव साइड है उसकी. I think in terms of accessibility, I definitely think that digital is the present, not the future. It is the present. Accessibility, and because mobile hai, people can access it wherever they are. ये बहुत अच्छी चीज है. But there is a difference. Broadcast and production, both are different things. ठीक है. Production levels हमें बेहतर करने हैं. जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या उसे स्ट्रीम कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी आसान अल्फाज में समझा देता हूँ सबके लिए, वो एज अ मीन आप प्लेटफॉर्म यूज जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा लोगों को. वो आप टेलीविजन भी करें, आप डिजिटल भी हर तरीके से करें, क्योंकि डिजिटल ज्यादा एक्सेसिबल भी है. लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं, जो ऑन ग्राउंड आप कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन, द सेटअप, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द टेक्निकल स्टाफ, the talent that you are using, वो जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक we are not going to see better pictures and आप क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं देख सकेंगे. प्लेटफॉर्म आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सही काम करना है वो प्रोडक्शन लेवल्स को बेहतर करने पे करना है. ठीक हो गया. ओके, सो हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं. शराज अख्तर, क्वेश्चन फॉर तंजील भाई. स्काई स्पोर्ट्स का पीएसएल शो करेगा? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन ट्विटर. ये ट्विटर पे सबसे ज्यादा सवाल होता है, स्काई स्पोर्ट्स कब करेगा पीएसएल? करा दे अब तो करा दे. So I think, if you want my own opinion, I think next year we will see either on Sky or BT. मुझे लगता है कोई ना कोई अगले साल ले लेगा, because I think the level now where the PSL is, I mean PSL for me has always been fantastic. Level has always been amazing. लेकिन it's come to a point now where it needs to expand into other territories. और हमने देखा है इस साल Sky New Zealand picked up PSL for the first time. I think Willow Sports also picked up PSL. Yes, in North America. बिल्कुल. And I think Tanzil, come on, push for Sky. We don't put it on BT. Come on, I mean, by putting on BT, you're just being diplomatic. जब भी हमारी मीटिंग होती है, I guarantee, जब भी हमारी मीटिंग होती है, मेरा यही सवाल होता है कि हमने PSL को दिखाना है अगले साल के नहीं. लेकिन इस पे show more conviction in your meetings. Come on. Just small thing on this point. छोटी सी बात बस इसके ऊपर. I think there's a massive difference of people who think, Sky showing the PSL what it actually looks like now. IPL हम करते थे few years ago, used to be IPL, and उसके लिए there used to be a massive studio, guest होते थे, presenter होते थे, used to be a very big affair. I think this is what people think PSL would look like on Sky Sports. लेकिन if you want my personal opinion, I think to start off the tournament for the first time, अगर हम कभी दिखाएंगे, it won't be like that. It will just be how we see it on Ham Masala, जैसे हम देखते हैं ना here in the UK. It's the world feed, which is taken, and it will go straight to air on our platform. The only difference is obviously we will have the HD feed. So for the first time, we can watch it here in the UK on screens in HD, and we run to the world feed timings. So har over ke baad break nahi lenge. Obviously, we have a set number of breaks after within an hour here in the UK. So if you ask me, do I think it will happen? I will obviously push for it. I will say as much as I can. And of course, look, abhi chance hai कि look, abhi 3-4 matches रहते हैं in the PSL. We know this, right? Yeah. So I'm not going to say anything. I don't want to say anything. I don't want to break any news or anything. Lekin from a personal point of view, will I try? Maybe we can test the waters. Maybe, I don't know. मैं कुछ कह नहीं सकता अभी. हम इसमें से तंजील कंट्रोवर्सी निकाल सकते हैं. हम आपको पहले अभी I mean in a way अच्छी बात होगी कि PSL नहीं खत्म हुआ.
because it was going towards a fantastic finish. I think this year's PSL has been the best, and I'm not saying this because Lahore पहली दफा पहुंचा है. I'm not saying this, but हम तो इसीलिए कहते हैं लाहौर पहली दफा पहुंचा है. Yeah. So I need to be very unbiased in my position, but जब लाहौर जीतता है तो खुशी तो होती है. Yeah, fair enough. So yes, there are 3 or 4 games left. I mean, it depends on when it happens and whether it's playoff style or semi-final, final style. We don't know. Lekin, as soon as we know more, as soon as I know more, then we'll see what happens. Abhi is saal ka. I'm not saying anything. Okay. ठीक हो गया. अच्छा ज़ोहैब, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगी. आपको लगता है जो 10 साल एक स्पोर्ट्स का गैप आया है उसकी वजह से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी और इस चीज में गैप भी आया है. बहुत सारी ऐसी कंपनी या लोग उसको एज अ प्रोफेशन अपनाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज क्रिकेट नहीं या कोई स्पोर्ट नहीं हो रहा था. अब जब दोबारा से आना शुरू हुआ है तो क्या लग रहा है लोकल कंपनीज या लोग इस तरफ आएंगे मजीद? 100%. आई थिंक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है अर्मिला. स्किल बहुत जरूरी है अपग्रेड करने भी और डेवलप करने भी. So people who were working in the 96 World Cup, PTV के बहुत अच्छे कैमरामैन, skillful cameramen worked for the world seat. लेकिन जाहिर है कि now most of them have retired and the technology has changed too. I mean वो तब standard definition में आप करते थे produce चीजें, अब सब कुछ HD के अंदर है. So skills develop करना बहुत important है. This is a great a starter that now all the matches happened here in Pakistan. इससे ना सिर्फ क्रिकेट प्रोड्यूस करने वाले पोटेंशियल प्रोफेशनल्स को फायदा हुआ है, बल्कि पीपल हु वांट टू मेक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट और प्रोडक्शन देयर करियर, दे हैव सीन अ रे ऑफ होप. और अगर हम ये डेवलप कर लेते हैं तो इसके 2 फायदे होंगे. एक तो पेट्रियटिज्म के पाकिस्तानीज को हम डेवलप कर लेंगे एंड पाकिस्तानीज विल बी ऑफ एक लेवल के बन जाएंगे. और सेकेंडली आपको एक सस्ता भी पड़ेगा ज्यादा. यू हैव टू ब्रिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम, अभी इंग्लैंड से आते हैं या न्यूजीलैंड से आते हैं, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, दे गेट पेड इन डॉलर्स एंड देन उनकी फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, इट्स अ लॉट ऑफ मनी. तो अगर पाकिस्तान में आप डेवलप कर लेंगे तो बहुत ज्यादा. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ आपको कि IPL का, कि आई हैव सीन इन इंडिया कि जब इंडियंस कि आउट ऑफ फॉर एग्जांपल एक 16 कैमरा प्रोडक्शन के अंदर, इफ यू हैड 12 बैंड कैमरास, 12 लोग काम कर रहे हैं, सो उसके अंदर 2 या 3 इंडियंस होते थे और बाकी 9 से 10 बाहर के लोग होते थे. विद इन 4 years उल्टा हो गया और 9 या 10 इंडियंस होते थे और फिर 2 या 3 ही गोरे बाहर के रह गए. So and Pakistanis are pretty street smart and they pick up skills very quickly. I'm not boasting about my country. It's I think it's a known fact. बड़े street smart लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं. I've seen people from most of the cricketing or sports production world. So I'll rate Pakistan very high in terms of picking up things. So मतलब अच्छी नीयत से अगर ये काम करें तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं. कि स्ट्रीट स्मार्ट में कभी ये होता है कि आपकी बुरी नीयत हो तो आप फिर चलाकियां दूसरी तरफ भी करना शुरू कर देते हैं, कुछ और सीन हो जाता है. ठीक हो गया. वो उसमें भी बड़े तेज है. अच्छा, we have another question. Do you really think digital live broadcast and social can help sports other than cricket to get much attention, much needed attention? आप दोनों से सवाल है, बारी दोनों जवाब दे दो. Very much. I mean, why not? Again, just what I said earlier on, कि इन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा. क्यों? अच्छा, सबसे पहले अगर आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो टेलीविजन के ऊपर जा रही है, और एक आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सिमिलर और वो जा रही है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो मेन फर्क आता है वो आता है सैटेलाइट कॉस्ट का, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. एग्जैक्टली. सो आप वहां पर पैसे काफी ज्यादा बचा लेंगे एंड यू विल बी एबल टू गिव एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी टू द टेकर्स. सो बिल्कुल किया जा सकता है. आप पैसे बचाएं और सेम क्वालिटी दें लोगों को, एंड व्हाई नॉट, पीपल विल वॉच इट. ओके, तंजील,
What's your take on this question? ये सोहेब इरफान ने क्वेश्चन किया था आपसे, आप भी कुछ इस हवाले से बताएं. Absolutely, no, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि it's that platform that you can use to gain a wider audience, but also to spread awareness very easily, because अब media consume करना बहुत आसान हो गया. Like we were saying, you got your phone, tablet, laptop, जो भी जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ और बस खोल के on करके आप देख सकते हैं. Yeah. So I think it shouldn't, see, हम तो cricket के साथ है, लेकिन it shouldn't be limited to cricket. There are so many other sports that can benefit from this. And वही बात है कि if you are passionate about a certain sport, if you are really into it, and you've done your research and you do your homework, so that's a good way. Digital platform is a good way to get something out and reach an audience and show your passion. And you never know. Look, digital media, इतना जब spread होता है ना, there's a good chance someone might pick something up. Someone at the top might look at this and say, "Oh, yes, ने बहुत अच्छा काम किया है." Let's start some conversations. इसके interview style बहुत अच्छा है. So let's start some conversations. So I think it opens up more doors for maybe something more like niche, something smaller. But I think it's a good way for someone to reach a wider audience. Great. We have another question. Zohaib भाई, आपकी looks और background perfect है. अर्तगल की रीशूट के लिए. किसके लिए? जो आजकल अर्तगल ड्रामा नहीं चल रहा. हाँ जी. अच्छा, तो उसमें क्या उन्होंने विलन बनाया मुझे कि पता नहीं, अभी तो फिलहाल हीरो बनाया, विलन ही हमें नहीं पता. अच्छा, विलन हीरो बना दिए थे. That's again a compliment. Better than poor man's Kabir Singh. That's the better one. तो अभी okay. एक और शिखा ने क्वेश्चन किया है. Sorry, I'm late. Looking great, Tanzeel bhai. Here is my question from Tanzeel and Zohaib bhai. How long until we see a Pakistani sports channel mainstreaming local sports and becoming a quality production? So we had talked about it, but still थोड़ा हम इसमें add कर देते हैं. शिखा, Tanzeel. I think this is a brilliant way to go right now. मुझे लगता है कि if anyone can capture the market of the local sport, look, Pakistan की local cricket, I think it's very enjoyable. I think if someone can capture that market and spread that, then that spreads the cricket. So yes, लेकिन बात वही है कि you need to improve the culture, and you also need to improve your production standards as well, and your broadcast equipment. So it's not something that's going to happen overnight. It's में बहुत time लगेगा because of everything which is so entrenched right now. अभी बहुत time हो गया जैसी चीजें चल रही है. So I think what you need is, it's going to be slow. It's going to be a slow process. Lekin, slowly improve, the production quality, in your production standards. Sorry, improve your broadcast quality. And just as we as you train more people up in Pakistan, you will have, people will pick things up really quickly. So I think in terms of that, once you have all the bases covered beforehand, then you can look to go and say, look, we have this fantastic idea. हमारे पास हमने ये करना है, हमने वो करना है. We want to capture, the cricket here. And I think there is a market for capturing that side of the Pakistan cricket, and I think it should be done. And I think the like Zohaib was saying, people will pick up things really quickly. And I think the more you train people, the more they understand, the more they get a wider understanding as well, which it would be amazing. Okay. Just wanted to add one point to it. I think जो main hurdle है from a business point of view, वो ये है कि people expect the return on investment very quickly. Sports television, for this you have to be patient. Eventually you will get there, and that's how the leagues also work. So sports business थोड़ा सा different है from just making a commercial film or cinema. आपको जैसे foreign return on investment मिल जाता है. So वहाँ पर patient होना है, and that is the biggest hurdle at the moment. People don't invest, और वो risk नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर जो भी businessman है वो ज़्यादातर उस विजन से सोच नहीं रहा फिलहाल. लेकिन जो भी करेगा उसको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पायनियर का एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी और नहीं है जो एक क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहा है, लेट अलोन क्रिकेट, किसी की भी.
जो कि पाकिस्तानी बेस हो. That's why always जब भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, इवन ये PSL भी होती है, we are bringing professionals from outside Pakistan. Absolutely. Exactly. What's point? Okay. I have a question quickly. Yes, sir. Yeah, sure. So Zohaib भाई के लिए सवाल है. Why जी. आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में we've never seen a production house make a documentary on Pakistan cricket or certain, why is it कि पाकिस्तान में लोग वेट करते हैं कि कोई बाहर से कोई Sky Sports बनाए, कोई और बनाए. I would love to see in-house Pakistani made documentary on, say, the history of Pakistan cricket or something, an event or something. आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं हुआ, हो सकता है? I think इसकी दो वजह हैं कि क्यों नहीं हुआ. Firstly, तो people don't know कि अप्रोच किसको सही तरह करना है फॉर आर्काइव फुटेज, और वो कहाँ है. जो पुरानी फुटेज भी सारी पड़ी है, स्टिल ऑन टेप्स, येट टू बी डिजिटाइज. सो एवरीवन इज वर्किंग सो ओल्ड स्कूल कि वो अब तो VCR भी आना बंद हो गए हैं. सो आई मीन पहले उनको डिजिटाइज करने के अंदर बहुत वक्त लगेगा. फिर भी ओल्ड स्कूल, आई डोंट नो इफ यू डू स्टिल, अच्छा आई एम श्योर यू डू लॉग जो करते हैं, लॉग करने का सिस्टम जो है, वो एक कल्चर डेवलप करना बड़ा जरूरी है. क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट फुटेज अ लॉट एंड देन कम अप विद. पाकिस्तान में बिल्कुल ये बन सकता है. हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी PSL के फर्स्ट सीजन के ऊपर, बट दैट वाज प्योरली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड हु वन. सो आई विल सेंड यू लिंक अगर कभी मैं भेज सका. सो वॉच दैट. बिकॉज उसको बहुत अच्छे से मार्केट नहीं किया गया, सो आई मीन वो कहीं बीच में ही बहुत कम लोगों तक पहुंच सकी. सो डेफिनेटली एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट इटसेल्फ. मैं 3 साल से यार आई एम ट्राइंग टू डू ए डॉक्यूमेंट्री ऑन जहांगीर खान, बट आई डोंट गेट द इन्वेस्टर्स, आई डोंट गेट पीपल, बिकॉज you are celebrating with all the respect, with all the respect to Michael Jordan, with all the respect to Tiger Woods, जिन पे documentaries भी बन रही हैं. The Last Dance, I think you must have seen it on Netflix. By far in terms of the achievements, there is no one who comes close to Jahangir Khan. Just purely on record, hard fact, Babe Ruth doesn't come close to Jahangir Khan. Jahangir Khan is at another level. 555 games over a course of 5.5 years. I mean, मतलब करीब ही कोई नहीं आ सकता. ठीक है, with all the respect, I mean the closest to me शायद मेरे ख्याल से यूसेन बोल्ट आता है, जिसने मतलब 3 ओलंपिक्स के अंदर, और मे बी माइकल फेल्प्स. But these are people that we need to celebrate them. और वो जब तक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन when the world will not see, तब तक नहीं हमें मिलेगा. अभी पाकिस्तान के अंदर सब डिस्कसिंग कि यार किस तरह करना है. अब पाकिस्तान में अभी तक बिकॉज देयर इज सो मच लैक ऑफ प्रोडक्शन, यही अगर जहांगीर खान इंग्लैंड के होते या अमेरिका के होते, अब तक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ने राइट्स खरीद लेने थे उनके. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिकॉज प्रोडक्शन होती नहीं है, इसलिए एट द मोमेंट वी आर एट अ स्टेज जहां पर नेटफ्लिक्स डायरेक्टली, और फॉर दैट मैटर अमेजॉन प्राइम डायरेक्टली इन्वेस्ट ही नहीं करता प्रोडक्शन के अंदर. सो दे यू हैव टू गो थ्रू अ रूट. यहाँ अमेरिका के थ्रू आए, तुम्हारी जानने वाली हदील, जिनसे मैंने पूछा था कि आपको कोई जानता है, बिकॉज हर सिस्टर मेक्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, शर्मीन उबैद, जिनको ऑस्कर भी मिला हुआ है. सो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, पाकिस्तान में यू कैन नॉट, बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस एंड इट इज स्टिल समथिंग दैट आई वांट टू डू इट. इवन इन हॉकी, आई मीन शहबाज सीनियर से शायद ही बड़ा टैलिस्मैन कोई आया हो हॉकी में एवर. I mean, he was, I mean, poetry in motion. Cliche use कर रहा हूँ. So Pakistan has a lot of people who can be celebrated and उससे inspire होंगे उन लोगों से. But again, it is the lack of. Nobody's willing. And we don't have that. But this is something which we definitely need to work on. Tanzeel. Okay. So guys, हम सबने ये realize नहीं किया that we talked about 1 hour and 10 minutes. That's what happens when you have 2 presenters in the house. So thank you so much guys for joining, and it was such a fun chat with you. I hope आप लोगों को भी मजा आया होगा. I had an amazing time. Thank you. So thank you so much, Tanzeel. Likewise. And thank you so much, Zohaib. Stay safe and take good care of yourself.
इंशाल्लाह फिर आपको ऑन एंड ऑफ हम अपने शो में बुलाएंगे और तकलीफ देंगे और ढेर सारी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच. Okay, thank you very much. Thank you, Tanzeel. Thank you. So that we were in conversation with Zohaib, Hussain and Tanzeel Khawaja and it was a fun chat और हमने बहुत ज्यादा बातें की है. I hope you like the show. हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए आपने एक काम जरूर करना है, वो ये कि आपने स्पोर्ट्स फीवर 360 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना है. वहां पर हमारे तमाम तरह एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे. फीडबैक दीजिएगा. अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.